Hello class 3rd students, I'm your science teacher. Today we will discuss living and. Today we will discuss your chapter 1 living and non-living things. Here is some warm-up questions. Identify the features of living and non-living things. One has been done for you. Look here, look at the table students. Name, plant, need of food, yes. Breathe to live, yes. Can grow, yes. Can move, no. Have babies, yes. So these are the characteristics of a living thing. So that's how you have to tick right or cross in the boxes. Okay, look at the second one, that is stone. Is any need of food? So you have to cross it. Breathe to live? No. Can grow? No. Can move? No. Have babies? No. So this is non-living thing. So that's how you have to complete this table. Let's know about living and non-living things of our surroundings. Difference between living and non-living things. Here is living things and non-living things. We see many things in our surroundings. Everything that we can see is classified into two groups, living things and non-living things. All animals and plants, including us, are living things. The pencil we write with, the book we read, the toys we play with are all non-living things. So students, living things क्या है? जैसे हम हैं, plants हैं, ये सब क्या है बच्चा? Living things हैं. Pencils, books or toys all are non-living things. Now, characteristics of living and non-living things. There are 7 characteristics of living things. Living things can move, need food, breathe or respire, excrete and grow, feel and reproduce. Some non-living things may show one or two of these characteristics, but living things show all 7 characteristics. That means students, जो आपके living things हैं वो आपके इन सभी characteristics को show करते हैं. Like if I touch you, you feel it. So that's how. But non-living things can't feel. So all the living things show all 7 characteristics. Now, non-living things can be divided into 2 groups. So आपके जो non-living things है बच्चा वो किस में divided होते हैं? 2 groups में. Those which were once part of a living thing and those which were never part of a living thing. That means वो things बच्चा जो कभी किसी living thing का part थे या फिर वो चीजें जो कभी किसी living things का part नहीं थी. Sand, gold, wood and glass are all non-living things. None of them shows any of the characteristics listed above. First group is those which were never part of a living thing, such as stone and coal. The second group is those which were once part of living things. Coal is a good example. It was formed when trees dried and sank into the soft ground millions of years ago. It means students क्या है जैसे stone और gold वो क्या है आपके नॉन लिविंग थिंग्स है बच्चा. वो तो एज ऑलवेज नॉन लिविंग थिंग्स है. बट कुछ नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं बच्चे? वो किससे बनते हैं? हमारे लिविंग थिंग्स से बनते हैं. जैसे कोल, लाइक दैट मीन्स कोयला. जो आपका कोयला है बच्चे वो किससे बनता है? जब आपके प्लांट्स बहुत सालों पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले क्या हो गए? डाई हो गए और वो डूब गए और बहुत ज्यादा जो है प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस के थ्रू वो क्या बन गया बच्चे? कोयला बन गया. बट एज नाउ coal is a non-living thing. So that is the difference between 2 types of non-living things. Living things move. Here is all living things show some sort of movements. Animals move from place to place in search of food and shelter and also to escape their enemies. They use their legs, wings or other body parts to move. दैट मीन्स जो आपके लिविंग एनिमल्स बच्चा जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं? वो मूवमेंट्स शो करते हैं. जैसे आपके एनिमल्स अपने खाने के लिए या फिर आपके अपने एनिमीज से बचने के लिए क्या करते हैं? वो इधर उधर जाते हैं. दैट मीन्स मूवमेंट करते हैं.
Plants usually do not move from one place to another but can move their parts. For example, they move their roots downward to obtain water and mineral nutrients from soil and the shoot upward for the sunlight. All living things show internal movement and some of them show external movement such as walking, jumping, flying, swimming, etc. सो स्टूडेंट्स क्या होता है जो आपकी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स जो है वो शो करते हैं. जैसे इंटरनल मूवमेंट्स आर डिफरेंट सो डोंट गो ऑन दैट साइड, बट इन एक्सटर्नल मूवमेंट्स आप एग्जांपल देख सकते हो जैसे वॉकिंग, जंपिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग. सो ये सब क्या है बच्चा, एक्सटर्नल मूवमेंट्स है. हियर इज अ पिक्चर, लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट्स. चिल्ड्रंस प्ले विद अ बॉल. A dog is running. Here is an activity. The figure below shows how fish react when the glass on one side of an aquarium tank is tapped with a finger. So in this activity बच्चा क्या हो रहा है, जब आप फिश को टच करते हो, किस आप अपने एक्वेरियम को टच करते हो तो फिश कैसे मूवमेंट करती है वो आपकी फिगर्स में आपको दिखाया गया है स्टूडेंट्स. So what you have to do, you have to write the answer of this question. What characteristics of living organisms does this demonstrate? So that is movement. Okay, students. Now, living things need food. Yes, everyone needs food. Living things need food to obtain energy, to grow and stay healthy. Plants make their own food by the process of photosynthesis. Animal gets their food from plants and other animals. तो बच्चे जो आपके लिविंग थिंग्स है उनको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है. किस लिए, ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और आपकी एनर्जी गेन करने के लिए. लेकिन जो आपके प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस. जो एनिमल्स है वो अपना फूड प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स से क्या है, गेन करते हैं. ओके, हियर इज अ पिक्चर, लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट्स. टू चिल्ड्रंस ईटिंग देयर फूड. Two children are eating food, a cow eating grass, and a plant is growing. Now, living things breathe. All living things need to breathe. Different animals use different organs to breathe. For example, some animals use their nose, fishes use their gills, and worms use their skin. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide through our nose. Plants breathe through openings present in their leaves called stomata. So students क्या है, अब breathing की बात आती है, हम सबको पता है जो हमारे living beings है वो क्या करते हैं बच्चा, breathe करते हैं. लेकिन हर एक living thing या हम बोल सकते हैं living being अलग अलग टाइप से क्या करते हैं बच्चा, ब्रीथ करते हैं. जैसे हम अपनी नोज से ब्रीथ करते हैं, लेकिन जो फिशेस हैं वो किससे करती हैं बच्चा, गिल से करती हैं. कुछ वॉर्म्स हैं जो किसकी हेल्प से करते हैं बच्चे, स्किन की हेल्प से करते हैं. ठीक है, सो हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी ब्रीथ करते हैं किसकी हेल्प से, जो उनकी लीव होती है उसमें एक प्रेजेंट होता है स्टोमेटा और उसकी ओपनिंग से प्लांट क्या करते हैं बच्चा, ब्रीथ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स लीव्स में बच्चा पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. उसी के थ्रू जो आपके प्लांट्स है वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं. Here are some pictures. A fish breathes with gills, sparkles and nose. A grasshopper breathes with sparkles and human being breathes with nose. Here is living things excrete. Excretion is the removal of waste from the body. If this waste was allowed to remain in the body, it could be poisonous. Animals and humans excrete waste in form of urine, feces, and sweat. We also excrete waste when we breathe out carbon dioxide. Skin helps to remove sweat from our body. Plants to excrete waste in form of oxygen and excess water through their leaves. Other waste such as gums and resins, etc. are also excreted by the plant's parts. So students क्या है, देखो अब आप सबको पता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से हम सिर्फ कितना खाना यूज करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है. बाकी जो फूड होता है या बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. और हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बच्चा अपनी बॉडी से क्या करते हैं, आउट करते हैं. जैसे इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, जो आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं वो किसकी फॉर्म में बाहर आता है बच्चे,
स्वेट की फॉर्म में, आप यूरिन की फॉर्म में। हम जो सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं बच्चा तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेस्ट। नाउ इन प्लांट्स, बच्चा प्लांट्स का जो वेस्ट होता है वो क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन होता है। प्लांट्स जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं बच्चा? रिमूव करते हैं। सो क्या है जो प्लांट्स, और हम बोल सकते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं वो जो है अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज एन एक्टिविटी। अ मोटर कार नीड्स पेट्रोल एंड एयर इज ordered to move. It produces waste gases. Which characteristic of living organisms are similar to those of motor car? Why is car not a living organism? So students, as you read about the living things, so you can answer these questions by yourself. Here is, living things grow and develop. When living things eat, they receive energy which helps them in their growth. Living things grow from smaller to larger size and finally become adult. We human beings are born and grow into adults. Seeds grow into baby plant and finally into a big plant or trees growing up. So students, क्या होता है देखो, grow and develop। देखो आप सबको पता है बहुत छोटे बच्चे हुए, फिर उससे थोड़ा बड़े हुए और बड़े हुए और आप बहुत बड़े हो गए। सो क्या होता है बच्चे, ये क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे ही हमारे प्लांट्स होते हैं, हम अपने सीड को जो है अपनी जो मिट्टी है उसमें मिक्स करते हैं, फिर थोड़ा सा छोटा सा एक प्लांट जो है ग्रो करता है, फिर और छोटा, फिर वो छोटा प्लांट बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है और वो बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, या हम बोल सकते हैं बच्चे ट्री बन जाता है। ओके, हियर इज सम पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर। ग्रोइंग अप, अ बेबी इज ग्रोइंग अप एंड बिकम एन एडल्ट। A seed is growing up and become a plant. Okay, students, here is living things feel. Living things react to change in their environment. They usually respond to touch, light, heat, cold, and sound, etc. They use their sensory organs such as eyes, ears, nose, skin, and tongue. Some insects have feelers to feel, such as butterflies and ants. Dogs have a very good sense of smell, and when they see food, saliva starts coming out of their mouth. Plants do not have sense organ but can feel things around them. The leaves of the touch-me-not mimosa plant closes when they are touched. The sunflower turns its movement towards the sun during the daylight. तो स्टूडेंट्स क्या है देखो, आप सबको पता है जो हम लोग हैं, हमें तो क्या होता है, हमें सब चीजें फील होती है। अगर मैं आपका हाथ जो है किसी गर्म चीज से टच कराऊं तो आप क्या बोलेंगे? नो मैम, इट्स हॉट। सो बच्चे, दिस इज द सेंस ऑर्गन। ओके, आपको किसकी वजह से फील हुआ? आपके स्किन की वजह से फील हुआ। वैसे आप बोलोगे मैम प्लांट्स को तो हम टच करते हैं लेकिन उन्हें तो फील नहीं होता है। नहीं बच्चा, प्लांट्स भी फील करते हैं। लाइक आपने टच मी नॉट प्लांट देखा है, जब आप उसकी लीव्स को टच करते हैं तो वो क्या हो जाती है बच्चा? सिंक हो जाती है। ओके, सिमिलरली जो आपका सनफ्लावर होता है, जब जो है सन जो आता है दिन में, वो उस टाइप क्या कर जाता है बच्चा? टर्न हो जाता है। सो दीज आर द मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ओके, here are some pictures. Look at the pictures, student. A girl touching the hot steam. A girl touches the touch-me-not plant. Here is sunflower, and in the end there is a butterfly. Now look at this beautiful picture of a butterfly. Forewing, antenna, proboscis, and abdomen and hindwing. Okay, students? Here is living things reproduce. All living things produce new organism of its kind. Some animals produce babies and some lay eggs. Plants mainly reproduce through seeds which can germinate in suitable conditions and grow into new plants. Some plants also reproduce through their roots, stems or leaves. A sunflower looks like one large flower, but each head is composed of hundreds of tiny flowers called florets, which ripen to become the seeds. So students, क्या है कि जो लिविंग थिंग्स है बच्चा वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मीनिंग होता है अपने जैसे किसी को जन्म देना। लाइक ह्यूमन बीइंग्स में वो क्या करते हैं बच्चे? किसी बच्चे को जन्म देते हैं। बट कुछ जैसे हैंड्स हैं आपकी जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं बच्चे? वो एग रिप्रोड्यूस करते हैं और एग से क्या निकलता है बच्चे? बच्चा निकलता है। ओके,
एंड इन प्लांट्स में बच्चा रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है? बच्चे सीड की हेल्प से होता है। और सीड को हम जब ग्रो कराते हैं वो एक फेवरेबल कंडीशन होती है। दैट मीन्स कुछ सीड जो है वो समर में जो है ग्रो करते हैं, कुछ सीड्स आपके विंटर्स में ग्रो करते हैं। ओके स्टूडेंट, here is a picture. Look at the picture. There is a cow, and here in the next picture there is a potato. In potato, shoot, stem and root. So बच्चा पोटैटो क्या है? आपकी जो है रूट से क्या ग्रो करना स्टार्ट कर देता है? आपकी दूसरी स्टेम ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। ओके, एंड इन द लास्ट वन देयर इज ब्रायोफाइलम. Okay student, this is a type of plant. In this type of plant the leaves grow from our leaves. Okay student, here is living things die. All living things grow and become old and finally die. This is called lifespan of living things. Different living things have different lifespan. For example, dogs have a lifespan of 10 to 13 years while a male housefly lives for 28 days. सो बच्चा लिविंग थिंग्स डाई मीन्स आप सबको पता है एक एज के बाद क्या है, जो पर्सन है वो क्या हो जाता है? ओल्ड हो जाता है, और फिर क्या हो जाती है बच्चे? डेथ हो जाती है। इसी टाइप से हमारे प्लांट्स भी जो है जब ओल्ड हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? बच्चा सूख जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो वैसे ही कुछ एनिमल्स भी हैं, जब उनकी लाइफ टाइम या लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? बच्चा डेथ हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव चेक एंड मेट. Write T for true and F for false statements. All animals and plants are living things. Yes, it is true. Animals use their legs, wings or other body parts to move. Yes, it is true. Plants cannot make their own food. It is false because plants make their own food. Living things grow from smaller to larger. Yes, it is true. Now, characteristics of non-living things. The characteristics of non-living things are as follows. They do not need air, food and water to survive. They do not respond to the change. They do not reproduce. They do not grow. They cannot move by themselves and they cannot die. So student, it is just opposite of living things. वो ब्रीथ नहीं करते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, वो कोई रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, और आपकी क्लाइमेट चेंज हो या कोई भी चेंज हो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है? रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ओके, सो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज to be called a living thing, the particular thing should have all the characteristics of living things. For example, a car shows few characteristics of living things such as it needs fuel for energy, can move from one place to another, but it is not a living thing because as it does not have other characteristics of living things. It means बच्चा आप बोल सकते हो कि मैम ऐसा तो नहीं है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करती हैं, या करती हैं बच्चा, लेकिन उस नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि वो आपके लिविंग थिंग्स की सभी जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको फॉलो करे. जैसे एक एग्जांपल गिवन है, जो आपकी कार है उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी बच्चे कहाँ से मिलती है? फ्यूल से मिलती है. ओके, लाइक द ह्यूमन बींग्स एनर्जी कहाँ से लेते हैं? खाने से लेते हैं. एंड कार जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव भी करती है, बट this is not a living thing. Why? Because bacha, it not follows all the characteristics of living things. Get it, student? Here is some pictures: a car, a washing machine. Now, difference between living and non-living things. Here is living things and non-living things. Look at the table, students. Living organisms need food, air and water. Okay. Living organisms can move on. Non-living things cannot move their own. Okay. Living organisms are sensitive. They respond to change around them. Non-living things are not sensitive. They do not respond to change around them. Here is. Now come to the students' fifth point. Living organisms reproduce themselves. Non-living things do not reproduce. Living organisms respire, they release energy from the food. Non-living things do not respire. Living organisms excrete, they get rid of waste materials from their body. Non-living things do not excrete. Living organisms have a definite lifespan after which they die. That means they have definite life cycle.
Non-living things do not have definite life cycle. Living things are made up of living cells. Non-living things are not made up of cells. So students, these are the main difference between the living things and the non-living things. As we already read all of these characteristics, so these are only in the form of table. Okay students, now we have check and mate. Have to solve it by yourself. Do you know? Human teeth are the only part which cannot repair themselves. So in human body, only the teeth is the part that which cannot repair themselves. Okay students? Now, what we read in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Whereas, things around us can be classified into two groups, namely living and non-living things. तो बच्चा जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो क्या होती हैं, दो चीजों में जो है हम उनको डिवाइड करते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. Living things such as plants, animals and humans have similar characteristics of life. तो बच्चे जो हमारे living things होते हैं उनकी क्या होती है, सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है. Living things eat, breathe, move, grow, reproduce their kind, feel and excrete the waste. So these are some characteristics which is follows by the living things. Non-living things do not show any such characteristic. They are either natural or man-made. Okay students? Here is some keywords. Characteristics, a quality belonging to a particular person, place or thing to identify them. That means कोई ऐसी quality बच्चा जो किसी person में हो, किसी place की हो या किसी thing की हो, जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, identify करते हैं. The next one is photosynthesis, a process of making food by the plants. वो प्रोसेस बच्चा जिस प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. सलाइवा, watery liquid that becomes out of the mouth. So एक टाइप का लिक्विड होता है बच्चे जो माउथ में प्रेजेंट होता है. ओके स्टूडेंट्स. स्टोमेटा, a small opening on underside of leaf through which exchange of gases take place. So जो ये क्या है होते हैं बच्चा, स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं, या बोल सकते हो ओपनिंग होती है किसमें, अंडरसाइड ऑफ लीफ में, और वहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन.